Okay, welcome everyone. Again, this is DW301 Basic Electronics. In this lecture, we will see some application of the diodes. We have already discussed about the models of the diodes, equations of the diode, and the formation of PN junction, and all the semiconductor physics and the basic preliminaries related to the diode, in which we replace a diode as a circuit element as by some models in when we are using a diode in circuit, we will replace the diode with some models, and there are three models available, or you can say there are three kinds of approximation. In first approximation, we replace the diode with the ideal diode model, and in the second approximation, we replace the diode by the ideal diode plus voltage source, and the third approximation, or the uh, piecewise linear model, we replace the diode by the voltage source, ideal diode, and resistor. So the third model is the most accurate model, but in the problems related to the diodes, or you can say in our course, we will encounter with the first two models of the diode. In most of the cases, we will encounter with the first two models. Okay, now let us see some applications of the diode. And in the previous session, previous live interaction session, I have discussed about the power supply, the regulated power supply, which we use in numerous circuits. Like all kinds of chargers have this generalized supply, and the specific element might be different in different chargers, but the generalized power supply is like this. Okay, and we know that for all the electronic elements, for all the electronic devices, sorry, for all the electronic devices, we require some kind of DC power supply. So it is necessary to obtain the DC power supply with the help of the wall outlet that we have. And why it is necessary? Because the other source for the DC power supply is the batteries, but batteries are quite expensive, and we know that they ran out. So we cannot use batteries everywhere. We can use batteries somewhere, but when we need some continuous uses of the electronic circuits, then we cannot use batteries. Then we need to find some other ways. So in other ways, there is a DC regulated power supply, and here we will discuss about those this kind of supply, which is used by all chargers, all adapters that we use for our electronic devices, like computers, like mobile phones, like any other electronic device. You can say the washing machines, all the devices which runs on the DC, and we provide them power from the wall outlet. We provide them power from the wall, or which is a AC source, which is a AC source. A wall outlet is a AC source. We provide power from wall outlet in our homes, in industries, everywhere there is a three-pin wall outlet. You have seen this, and there are different rating. Some are of 5 ampere, 15 ampere, and these all things are pertaining to the classical electrical engineering. Okay, so we need not to go in this kind of details. So wall outlet. So basically AC source of 50 hertz frequency and 220 volts. So, but as we know, in electronic for the electronic devices, the power supply of 12 volt DC, 5 volt DC, generally for the electronic devices, the power supply of 12 volt DC for electronic devices. The power supply of 5 volt DC, 10 volt, 12 volt, 8 volt. So these kind of DC is required. 12 volt we use for the chargers, mostly chargers of the mobile phones, and there's a 20 volt DC generally used for the for the laptop chargers, laptop adapters.
if you try to measure the output of a uh, mobile charger, or the output which is coming from the second port. One port is inserted inside the wall outlet, and the other port, the output is coming. Then you can measure the 12-volt voltage by the multimeter. When we use multimeter in a DC voltage mode, and by some proper settings, you can measure this 12-volt. And 20-volt for generally for the uh, mobile laptop chargers, and 5-volt generally for most VCC supply. 5-volt. Nowadays, most of the ICs require a VCC of 5-volt. Even the most widely used IC, operational amplifier, is also required the plus 5-volt nowadays. Generally, usually, in previous time, there was a supply of plus 15-volt and minus 15-volt is required, and nowadays there's an improvement, and you need only a plus 5-volt power supply. Okay, so these are the improvements, and by these all discussion, we can understand that in our households, the power which is given by the uh, some power supplying unit, like you here in Uttar Pradesh, UPPCL, and in India the generalized is the power grid. It is a AC voltage. Okay, and most of the electronic devices which we are using nowadays are based on are needed the DC supply. Only the DC supply is required, and is of order of 15, 5, 10. It means not a very high DC supply is required, very low DC supply is required. Okay, and nowadays in the advancement of circuits are taking place, and these voltages are decreasing, more decreasing. So what we need to understand, that there should be some way by which we can convert this AC voltage to the DC voltage. So here I will draw a generalized power supply diagram which we used in most of the chargers, and not all the components in all the chargers. There is a combination of components are required. So that will depend upon the specific kind of charger or specific kind of power supply we are making. Okay, so here I will draw some diagram. The block diagram. This is a block diagram of power supply, and you can see here first the AC input. Okay, so the AC input which we generally use, and we can get this input from the wall outlet, and this kind of uh, arrangement is there, and the supply is there, AC input. And for in Indian households, the frequency is 50 hertz, or not in household, all the industry everywhere. In India, this supply is 50 hertz, and in US and other countries, in Europe, it is 60 hertz. So this is just the frequency of the signal, and the signal is like this. This is the generalized signal which we use. So this is the supply we are getting from the wall outlet. So we need not to discuss this supply anymore. Now we will see how we can convert this supply into the DC voltage which is required by the electronic devices. And electronic devices are the devices which are dependent on the semiconductors, which are made of semiconductors, like and the most basic electronic device is the PN junction, which we have already studied. And we will see in this supply, in this power supply, there is a use of PN junction in a particular block. Okay, so we will see that. Okay, so here AC input is there, and we provide a 250 volt AC, 220 volt AC.
So this AC is stepped down by some transformer. We use a transformer, and then we use some rectifier. I will discuss these blocks one by one very briefly. And then we use some filters, and at last we use some voltage regulators. These are the ICs. Okay. Now we shall discuss one by one every block. This is the DC power supply. This is the block diagram of DC power supply. How can we generate a DC power supply with the help of AC input? And because AC input is readily available in our households, in the industry, we know that, and the power transmission companies are supplying these DC power supply. Okay, and nowadays we are using a lot of electronic devices, so we need to convert this AC into the DC. And for different electronic devices, the different DC voltage level is required. So there are different kind of chargers, different kind of adapters are there. So we can see if some kind of charger is there which is for some trimmers, for trimmer, then we cannot use the trimmer charger for our mobile, because the trimmer requires a different kind of DC voltage levels for charging, and the mobile phone require different DC level. So there are different adapters available, and but the common thing is this: they all get input from the AC power supply from our households. Okay. So now in the first step, what happens? This AC input is stepped down, because generally this AC input is 220 volt, 50 hertz DC. So this is little high. So first we need to step down this thing, and we know that this is the transformer. Transformer is a basic device, and which changes the voltage level. Well, I don't know if you people are aware, if you people are if you people already have introduced with the transformer or not. But the thing is this: the transformer is a basic electromagnetic device which changes the voltage level. So let me give you some basics of the transformer. So transformer is a device which works on the mutual induction principle. And in this, I'm just telling you the basics. I'm not going to teach you the transformer here, but I will just tell you some basics of the transformer. Here, there is a voltage provided, voltage given, and you can see some current is flowing, and with the mutual induction, when the current will flow, the magnetic field will generate, and this magnetic field will couple the second coil, and there will be some current and voltage will generate. So this is the principle of transformer, and the voltage and current. And so with the help, and by choosing the number of turns in the coil, we can decide the voltage level. It means we can decide whether the transformer is a step up transformer or a step down transformer. So if this is the primary coil, and this is the secondary coil, and if the number of turns in the primary is greater than the number of turns in secondary, then our transformer is the step down transformer. So basically here we use the step down transformer, and what really happens inside a transformer, whatever voltage is applied, the output from here you will get some less. The frequency will be same. Here let us suppose we want to reduce the input to the 40 volts, so the output will be 40 volt 50 hertz. So the voltage level will reduce. Okay, so voltage level will reduce, but what you need to understand, the power will be same. So this V1 I1 equal to V2 I2,
and we can decide the voltage, we can decide the number of turns according to voltage, the how much we want to reduce the voltage, and with the help of the formula v1 over v2 equal to n1 over n2, you can decide the number of turns. Reason n1 is the number of turns in primary, n2 is the number of turns is the secondary. So I think this is the sufficient knowledge of the transformer. तो ट्रांसफॉर्मर में इतना ही हमें जानना है बेसिकली. लेट मी टेल यू इट अगेन. हमने क्या किया है कि v1 over v2 equal to n1 over n2. Basically, by this we can decide the number of turns, and here generally we use a step down transformer. तो यहाँ पे step down transformer में क्या होने वाला है कि आपने जो यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड किया है वहां पे आउटपुट जो मिलेगी दूसरे पोर्ट पे वो आपको रिड्यूस मिलेगी, बट पावर हमेशा सेम रहती है. यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस v1 i1 मस्ट बी इक्वल टू द v2 i2. ओके, तो ये बेसिक ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है. इन केस इफ यू आर नॉट इंट्रोड्यूस टू द ट्रांसफार्मर अर्लियर in any course or subject, here I have just introduced the basics of the transformer, and जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो अगले सेमेस्टर में मशीन्स पढ़ेंगे. डेफिनेटली उनको समझ में सारी चीजें मे बी सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, आई डोंट नो, बट वो मशीन्स पढ़ेंगे. और जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ेंगे आगे मशीन एक दो सेमेस्टर लगातार. तो वहां पे उनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा होगा. यहाँ पे जस्ट मैंने एक बेसिक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर बताया है बिकॉज मैंने यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर का यूज किया है. तो बेसिक्स क्या है कि यहाँ पे हम कुछ सप्लाई देंगे और वो उसकी स्टेप डाउन होके सेम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हमें मिल जाएगी, और जो भी कुछ होगा वो ट्रांसफार्मर के अंदर होगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं. ठीक है, इसके बाद जो डिवाइस होगी यहाँ पे हमें अगेन एसी मिल गई. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया था, एसी प्रोवाइड किया था. अगेन यहाँ पे हमें एसी मिल गया जो कि मैग्नीट्यूड में थोड़ा कम है. अब क्या है यहाँ पे हमने यूज किया रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर जो डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू द डीसी. नॉट प्रॉपर और स्मूथ डीसी. डीसी का मीनिंग होता है बेसिकली एकदम स्ट्रेट कांस्टेंट करंट डीसी, बट नॉट लाइक दिस अ पल्सेटिंग डीसी. डेफिनेटली डीसी में तो चेंज करती है डिवाइस ये, बट हम ये कह सकते हैं कि डीसी नहीं होगी वो प्रॉपर. अब डीसी की प्रॉपर और होगी डीसी कैसे तो हम देख लेते हैं. यहाँ पे मान लीजिए ये इनपुट है जो कि ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके आई है. नेक्स्ट क्या होगा कि रेक्टिफायर पे जब जाएगी तो ये इसको अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू कितना है, 0. ऑब्वियसली हर एक साइनोसॉइडल का अगर हम एवरेज वैल्यू ऐसे निकालेंगे ना पूरी साइनोसॉइडल वेव का तो 0 आएगा, बिकॉज जितना ही पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में एवरेज 0 है. तो एवरेज 0 है तो मीन डीसी वैल्यू 0. ठीक है, तो यहाँ पे बट हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाफ साइकिल. हाफ साइकिल के बेस पे हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो एक अलग चीज है. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एज ए होल फॉर ए कंप्लीट साइन वेव के अगर हम एक साइकिल की बात करें तो उसमें एवरेज 0 होगा. बट यहाँ पे जब रेक्टिफायर से आउटपुट हमें मिलती है, अगर हम प्रॉपर रेक्टिफिकेशन करें तो हम इसको यूनिडायरेक्शनल कर देते हैं. यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस में होती है, but with the help of rectifier which is an electronic device, तो इसको हम यूनिडायरेक्शनल कर देते हैं. तो यूनिडायरेक्शनल कर देंगे. अब इसकी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, देन डेफिनेटली वी विल हैव सम एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू. तो इसमें डीसी आ जाएगा. ठीक है, तो डीसी करंट आ गया, वही करना, वही पर्पस होता है रेक्टिफायर का. द पर्पस ऑफ रेक्टिफायर इज टू कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी. तो बेसिकली वी यूज द वेरी फेमस डिवाइस पीएन जंक्शन. तो यहाँ पे हमारा रोल आता है बेसिकली. हम यहाँ पे आई एम डिस्कसिंग द जनरलाइज्ड डीसी पावर सप्लाई, हाउ कैन वी कन्वर्ट द एसी इनटू द डीसी. So now we will see what are the components which are pertaining to the electronics. Okay, so this is the
power supply, rectifiers and resistors. We use rectifiers and resistors in order to build the rectifiers. That we will see in the next lecture. How can we build the rectifiers? And I will provide you notes on the rectifiers, and in a one small session we will discuss the working of rectifiers, and rest all you will get from the notes, and those all things are just the parameters and all the constants related to the rectifiers, and main thing is the working. तो मुद्दे की चीज है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वर्किंग को समझेंगे, बाकी सब चीजें जो होती हैं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो सब हम नोट्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा देन अगेन वी विल डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे और ट्रांसफार्मर में पता है क्या यूज होता है, इंडक्टर्स यूज होते हैं। नाउ यू कैन सी here we have इसको हम बोलते हैं pulsating DC, actually pulsating DC, it is a DC but there is a special name pulsating DC. Why? Because there is some sinusoidal component is also there, some harmonics are also there, so that's why we call it a pulsating DC. And now in the next section is the filter. So यानी power supply यहाँ से शुरू हुई, यानी AC outlet आपकी गई, again let me repeat so that the sequence is not broken. AC इनपुट यहाँ से शुरू हुई और ट्रांसफार्मर ने आपका इसको चेंज किया, स्टेप डाउन किया, इसके बाद रेक्टिफायर ने इसको रेक्टिफाई किया। अब कैसे करता है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस है। आई होप बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, बट अगेन मैं जैसा कहा हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि सभी बच्चे 10th बेस से हैं, तो उसके बाद से हम पढ़ाएंगे। तो इसके बाद इसलिए मैंने इतना ये ट्रांसफार्मर का डिस्कस भी किया है, बट क्योंकि 12th बेस वालों को तो ये सब चीजें आती हैं, इससे ज्यादा आता है, मुझसे ज्यादा आता है इस चीजों में। तो पल्सेटिंग डीसी जो है आपका जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पर रोल आता है फिल्टर्स का, जो कि अभी हम पढ़ेंगे जस्ट नाउ आफ्टर दिस description of the power supply we will come to the topics of filters. So we use filters in order to smooth this supply. So इस सप्लाई को और स्मूथ बनाने के लिए, बिकॉज वी नो दैट इसका एवरेज तो हमें मिल गया, बट लेकिन डीसी तो ऐसी होती है ना दिखने में कुछ, हाँ ऐसी चाहिए हमको। तो ऐसा कुछ करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा फिल्टर से थोड़ा इसको और स्मूथ बनाते हैं। तो फिल्टर को यूज किया हमने। तो फिल्टर में हम देखेंगे यहाँ पे हम पैसिव फिल्टर्स की बात करेंगे। एक्टिव फिल्टर्स भी आपके होते हैं, बट एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं वो सब हायर थर्ड ईयर में आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो चीज वहां पे अभी हम बात करेंगे पैसिव और एक्टिव की। और पैसिव और एक्टिव क्या होता है ये आई होप मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ओके। नहीं किया है देन लेट मी नो वाया ईमेल, देन डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट अगेन। तो पैसिव और एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम पैसिव फिल्टर्स की बात करेंगे। और जनरली पावर सप्लाई में फिल्टरिंग जब भी होती है वहाँ पैसिव फिल्टर्स यूज होते हैं। वी डू नॉट यूज एक्टिव फिल्टर्स फॉर द पावर सप्लाई, वी कैन यूज बट उसमें रिडंडेंसी हो जाएगी। तो वो क्या चीज है अभी आप छोड़िए, फिलहाल आपको बस समझना है कि फिल्टर्स का हम यूज करेंगे। तो फिल्टर क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम पैसिव फिल्टर यूज करते हैं बिकॉज वी यूज पैसिव एलिमेंट, यानी आर एल और सी, इन तीनों की हेल्प से हम फिल्टर्स का यूज करेंगे। और फिल्टर जो है इस सप्लाई को स्मूथ बना देगा एकदम। कैसे बना देगा, स्मूथ कैसे कर देगा, यानी कि फिल्टर इसको जैसे ये है तो इसको कुछ इस तरीके से बना देगा सप्लाई को। यानी अब भी लेट मी ड्रॉ इट मोर क्लियरली। कुछ इस तरीके से। और अब आप देखेंगे तो अब जो डीसी वैल्यू बनेगी वो और अच्छे से आ जाएगी, यानी कि बिल्कुल उसके डीसी वैल्यू के ऊपर नीचे कम है। यहाँ पे आप देख रहे हो डीसी वैल्यू के ऊपर नीचे रिपल्स बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे रिपल्स और कम हुए हैं, यानी कि जो वेरिएशन है बिकॉज ऑफ एसी, बिकॉज ये पल्सेटिंग डीसी है, हमें स्मूथ चाहिए एकदम। तो वहां पे हम यूज करते हैं फिल्टर्स का। फिल्टर्स कैसे बनाए जाते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। हाउ कैन वी डिजाइन द फिल्टर्स विद द हेल्प ऑफ पैसिव एलिमेंट्स आर एंड सी। तो यहाँ पे आर एल सी के बेसिक्स देखेंगे हम। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द आर एल एंड सी को डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द फिल्टर्स। एंड देन यू कैन सी हियर एंड वी कैन स्मूथ दिस सप्लाई विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। जनरली हम पाई फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर्स यूज करते हैं।
एंड आई होप इन द नेटवर्क सब्जेक्ट भी आप ये लोग पढ़ रहे होंगे फिल्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत, अगर वहां पे पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है, इसके बाद हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो ये 3 टांग की आईसी होती है, जो कि आप आई होप कि आपने देख ली होंगी और वहां पे अपने लैब्स में। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, आपको एकदम स्मूथ डीसी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपने जब यहाँ पे आपने इतना इस तरीके से जनरेट कर लिया, फाइनली एकदम स्मूथ डीसी वैल्यू के लिए आप वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। इसके लिए हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, बट आई थिंक प्रैक्टिकल आप जरूर करेंगे इसका। तो थोड़ा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ इसके लिए। वोल्टेज रेगुलेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपका वोल्टेज को बिल्कुल रेगुलेट करते हैं, इसमें डीसी वैल्यू बनाते हैं, बेसिकली डीसी वैल्यू बनाते हैं, ये वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये 3 टांग के आईसी होते हैं, ये तो आपने देखी, मतलब आप देख लोगे प्रैक्टिकल जब करोगे, और मैं थोड़े डायग्राम वगैरह भेज दूंगा इनके, क्या होते हैं क्या नहीं होते, कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जरूरी है, बिकॉज थ्योरेटिकली तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, पर सामने जब हमारे आईसी आती है तो हमें समझ में भी नहीं आता है कि जनरली इसके साथ करना क्या है। ये जो इसमें 3 टांगे निकल रही हैं, उनको पिंस भी बोलते हैं हम, तो क्या उनका यूज करना है, क्या करना है उससे, ठीक है। तो तो वो चीज हमें, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इन केस अगर आपने उसमें नहीं किया है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज कि ये आईसी होती है, इनको हम 7, 8 और 7, 9 सीरीज में होती है, ठीक है। तो 7, 8 और 7, 9 मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यानी यहाँ पे वोल्टेज आ गई, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 7805 आईसी का यूज किया है, तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज आया होगा, डजेंट मैटर कितना वोल्टेज लेवल है, आउटपुट में मुझे +5 वोल्ट की डीसी मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे 7910 का यूज किया है, तो आउटपुट में यहाँ पे मुझे -10 वोल्ट की डीसी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स को। ये 7801 से लेके आई थिंक 7818 तक होते हैं, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, प्रैक्टिकल डेटा शीट है ये। और ये कुछ ये भी 7901 से लेके 7918 तक होते हैं, 20 तक भी होते हो शायद। तो ये मैं देख के बता दूंगा आपको, और यानी कि ये प्रैक्टिकल डेटा शीट में आपको भेज दूंगा कि प्रैक्टिकल मीन्स यानी मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। अगर मान लो आपको अभी कल को कहा जाए कि डिजाइन करो सप्लाई, तो जनरली लड़के यही बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइनर प्रोजेक्ट्स में ये बना लाते हैं कि ये सबसे आसान है, बट अपने हाथ से बनाओगे तो ये बनाना बहुत कठिन है। अपने हाथ से खुद एक एक चीज को अगर आप यूज एक एक चीज को शोल्डर कर रहे हो एक सिंपल पीसीबी पे, और फाइनली अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई अगर चेंज कर सकते हो किसी भी तरीके से, यानी कि आपको आप बना सकते हो इसको, बहुत आसान सर्किट होता है। कोई भी चार्जर सर्किट बनाना सबसे आसान काम होता है, और मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, बदल के बनवा लाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे आपको समझना है कि ये कॉमर्शियल चीजें हैं जो कि मार्केट में जब हम खरीदने जाएंगे, अगर हम कहेंगे 7810, तो डेफिनेटली +10 वोल्ट आउटपुट के लिए वो आपका आईसी वर्क करेगा। तो इनके बारे में डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो मैं और थोड़ा प्रैक्टिकली इनको आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, जो भी बेसिक्स हैं इनके, और कैसे आपको कॉमर्शियली अवेलेबल हैं ये सारी चीजें हम और डिस्कस कर लेंगे, और कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या इसका पिक्टोरियल डायग्राम होता है, तो मैं ये सब भेज दूंगा। बट बेसिकली अब यहाँ पे आते हैं, हमारे इंटरेस्ट की चीज क्या है, यहाँ पे हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट है रेक्टिफायर में और फिल्टर में। तो ट्रांसफार्मर तो हम पढ़ ही लेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में जितना बेसिक्स हमें जानना था, जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड था, वो हमने यहाँ से कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आती है बात रेक्टिफायर की, यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट की चीज दिखाई दे रही है, जो कि अभी अभी हमने स्टडी करी है, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये डायोड अगर यहाँ पे यूज किया है, देन डेफिनेटली ये हमारे लिए इंटरेस्ट की बात है कि ये कैसे डायोड की तरह डायोड इसमें वर्क करता है। और फिल्टर्स बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक है, बट एक्चुअली यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्टर्स क्वालिटेटिवली। Qualitatively, I will discuss how can you design the filter just by looking at the circuit, just by looking at the circuit, which
comprises the passive components like resistor, capacitor, inductor. You can decide whether this is a low pass filter, high pass filter, band pass filter or band reject filter. तो ये चीज हमें सीखनी है, तो ये हम करेंगे अभी नाउ. So I think now we will start the filters. Vaibhav, please stop this now. Vaibhav, are you hearing me?